Okay, good afternoon, all of you. Let's start today's lecture. In that lecture, we'll discuss about the NFS. So NFS stands for Network File System. It is used to store the centralized data. Okay, so if some organization wants to store the centralized data, so let's assume that here I have some instances, instance 1, Ubuntu instance 2, and Ubuntu instance 3. And I want to store my data centrally. For that, we'll create one NFS system, network file storage. So let's say that this one is an NFS. NFS stands for network file storage. Okay, so here we'll create a centralized storage for all the instance. Means these instances, instance 1, so for example EC2 instance 1, EC2 instance 2, and EC2 instance 3. So assume that these three instances are there, and these three instances wants to store the data centrally. For that, we create a central NFS systems, and in that case, the EC2 1 can store the data on NFS. Similarly, EC2 instance also store the data centrally, and third instance of EC2 is also wants to store the data centrally. So in that case, we can store the data centrally. Normally, whenever we launch the EC2 instance, we get the separate storage center. Okay. So for example, EC2 1 have separate center, EC2 have separate storage center, EC2 3 have separate storage center. But if any organization wants to store the data centrally, then we can apply the logic of NFS. In that, we can create a file system, and after that file system, we can host these all instances on this NFS. So that means these three instances can access the same storage space. Okay, so now we need to perform this operation. For that, we require a NFS file system. So click on that. Click on the services. Let's do now. Today we'll perform two tasks. Today we'll perform only one task, and day after tomorrow we'll perform another task on NFS. Okay, so let's assume that here is just 1 minute. So in the today's task, we'll discuss about, we'll create two instance, 2 or 3. You can say that here today we'll create 2 or 3 instance of EC2. Create 2 or 3 instances of EC2. After that, we will mount 2 or 3 instances on NFS. So before that, we'll create NFS file system. Okay. And day after tomorrow, we can perform this same operation on web server. Can perform same operation on web server. So let's start today's practical. So in that, first of all, we'll create the NFS system. First of all, we'll create the NFS file system. After that, we will launch these 2 or 3 instances, and after that, we'll mount this. We'll mount these instances on NFS. Okay, so these are the tasks. So in first step, we'll create the NFS file system. After that, we'll create the NFS file system by using EFS. After that, we'll launch 2 to 3 instances, and after that, we'll mount these instances with NFS, and after that, we'll perform some practical. Okay, so sharing data center. Problems of who can perform the operation on sharing data center. Okay, so let's do that. First of all, we need to create the EFS system. So for the EFS, we need to click on the storage section. In the storages, we will create EFS. Okay, elastic file system. It is totally depend on the NFS network file system. Okay, NFS stands for network file system. We'll create this. Click on that. So that by default, I don't have any NFS or EFS file system. So here's a demo. If you want to watch that demo, then you can check. These are the charges of EFS system. Okay, for standard storage, they took 0.36 per GB. For
This storage they took 0.027, one zone storage they took 0.192, one zone storage for they took 0.0145, and these are the storage type and these are the pricing calculator of AWS. Okay, so right now for practice purpose we took the standard storage, उसमें हम standard ही purchase करेंगे. So let's start. Here is a bottom option. In the top side corner option we have option of create file system. In the first step, we'll create the NFS file system. NFS is a network file system, and for that, AWS provide the EFS service. Make a note of that. We need to click on the EFS service. Okay, so we already created that. We already clicked on the EFS services. Then this window will be appear. Click on the create file system. Here we need to enter your NFS system, whatever it may be. Name must not be longer than 256 character. Must only contain letters, numbers, and these characters. Plus minus equals to underscore colon and slash. Okay, so here I will create my NFS system as a name of ESCU only. So here here's a default data center. Okay, if you want to change, then we can change, but for that we need to create our own VPC. And now after this EFS chapter or EFS subject, we will discuss about the VPC also in the next lecture. So first of all, here I will use only by default VPC. I don't want to change. See, all the networking information or all the networking parameters are installed by using this VPC. Do not change this VPC until and unless you need to understand the concept of VPC. Whenever we're trying to create that VPC, after that we can able to change. But right now, here I will use only own PSCOE and by default VPC. So here's the option regional and one zone. So what is the difference between regional and one zone? Here also information stores the data redundantly across the AZ. What is availability zone? AZ stands for availability zone. So we all know that we have a number of zones are available. So for example, see, when we click on that, we have number of zones. Okay, so here I will perform the operation on Mumbai region. Click on that. So in that Mumbai region, we have number of data centers are available. Okay, number of data centers are available. So when we click on that, so it will ask, do you want to store the data across the availability zone? That means if you want to store the data on Mumbai, and Mumbai have three different data centers. So do you want to store the data on three different data centers, or do you want to store on single availability zone? Okay, अगर आपको सिंगल पे करना है तो सिंगल पे करो और रीजनल पे करना है तो रीजनल में. इसमें ये ना रीजनल में क्या करता है कि डेटा विल बी स्टोर्ड ऑन रिडंडेंटली. दैट मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी अवेलेबिलिटी जोन होगी आपके रीजन के अंदर उस पे ये डेटा क्रिएट करेगा. इसमें क्या होता है कि अगर कोई पैंडेमिक आ जाता है या वी कैन से दैट डिजास्टर आ जाता है, फॉर एग्जांपल फ्लड है या वी कैन से दैट अर्थक्वेक है, तो आपका डेटा रिस्टोर करने के लिए आपके पास ऑप्शन है. इसीलिए मैक्सिमम जगह रीजनल लेते हैं. But if you want, if you have any money problem or we can say that financial problem, then we can also select the one zone. Okay, so click on the customize, we'll get the information. If you want to set the optional name, here is the option regional, enable automatic backup. It will take a backup of that. Okay, so life cycle management, it will take the 30 days from last access. इतना आपका डेटा ले सकता है. So there are two portions. जनरल पर्पस के लिए आपको फाइल सिस्टम चाहिए. दैट मींस नॉर्मल पर्पस के लिए इफ यू वांट टू स्टोर द डेटा, इफ यू वांट टू रिट्रीव द डेटा लाइक दैट स्टफ, देन वी विल यूज जनरल. मैक्सिमम इनपुट आउटपुट स्पीड चाहिए. दैट मींस मैंने जैसे भी क्लिक किया तो मुझे डेटा मिलना चाहिए और जैसे मैंने सबमिट किया तो डेटा इंस्टेंटली सबमिट होना चाहिए. दैट मींस मैक्सिमम आईओ स्पीड चाहिए. सो ये चार्जेस पे ऊपर डिपेंड होता है. Just that's purpose. If you want to select the general purpose, then we can select the general purpose. If you want to perform by the maximum input output speed related operation, then you can select. Okay, so these two options are throughput mode, bursting mode and provision mode. Bursting में क्या होता है कि आपके सर्वर के हिसाब से जैसे जैसे आपको स्पीड लगती है ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज हो जाती है. दैट मीन्स इनपुट आउटपुट और थ्रूपुट के लिए आपको स्पीड जनरेट करने को मिलती है. सो ये बस्टिंग मोड ही आपको कभी भी सिलेक्ट करना है. जब भी आप प्रोविजन मोड करते हो तो फिक्स साइज का थ्रूपुट मोड होता है. दैट मीन अगर आपको राइट नाउ स्पीड कम चाहिए तो बाय व्हेन सेलेक्ट प्रोविजन मोड, if you require a more speed, then we will use bursting mode. So according to condition we need to select bursting mode or provision mode. So make a note that when we select the provision mode, in that case throughput is fixed at specific amount.
that means we need to specify the condition. Okay, for example, I required a 512 MB throughput speed, then I want to specify the provision mode. Okay, so after that, just here is a checkbox is available in that. That if you want to use encryption, then we can click on the this encryption mode. If you don't want to use, then uncheck it. Okay, but right now we require an encryption mode. See what is the reason behind that. So here is my different types of instances are available, and I'm storing the data centrally. So no other person, or we can say that intruder, wants to access the data. So for that restriction, we need to understand the concept of security. For that, whenever we store the data centrally, data must be in the encryption format for the security purpose. इसीलिए आपको security on करना है तो on कर सकते हो, otherwise change कर सकते हो. ये security के अंदर भी different types of securities are available. AWS key management service, KMS key management service available है. Then we can use the separate, we can use the symmetric key, asymmetric key, so we can add this key. Okay, so आपके पास key है खुद की, so we can upload this key and we will apply the concept of encryption. Otherwise, if you don't want to use, then click on this. Okay, so after that, if you require a tag, then we can provide, but right now we don't want to use a tag, so click on the next. So this one your VPC, these are the 3 different availability zones. So AP South 1A, this one is the data center 1, data center 2 and data center 3. So इसने तीन ही डेटा सेंटर के अंदर 3 डिफरेंट डेटा सेंटर के अंदर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है. ओके, सो इफ यू वांट टू चेंज तो आप चेंज भी कर सकते हैं. यहाँ से क्लिक करके आप डिफरेंट कीज भी ऐड कर सकते हैं. मेक अ नोट ऑफ दैट, यहाँ डिफॉल्ट ही होना चाहिए. मेक अ नोट ऑफ दैट. ओके, सो इसमें चेंजेस नहीं चाहिए. So after that, click on the next. Click on these are the additional services. Prevent root access by default, enforce. If you want to check, then we need to pay extra amount for that. Click on the next. So this is the total information. This is the total review and create system, file system for that. And after that, we'll click on the create. So after a few seconds, it will create your file system. File system is created. Took some time. So here is we are not giving any name. Right now file system is available. Okay, ये file system available है. आपका नाम देना चाहिए था यहाँ, आप देना चाहते हो तो यहाँ दे सकते हो. Okay, so click on that. So file by default, this is my file system name. Right now I have only 6 KB of data, but whenever we upload the data, the size will be increased. Okay, so here we selected the standard one zone option, standard option, and this one is a throughput. Right now we don't have, we didn't store the data, so for that reason we don't have any throughput, and file system is available right now. Okay, so when we created on Saturday at 9:45, I think there is a time problem. At that time we created, and this one is a availability zone is a regional. Okay, so our file system is created, and this one is a charge of that your file system 0.043 पर GB. ओके, अगर आपके पास 1 GB का डेटा है तो ये इतना चार्ज लेगा. जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा वैसे वैसे चार्जेस. सो राइट नाउ मेरे फाइल सिस्टम तो क्रिएट हो गई है. नाउ वी नीड टू क्रिएट द इंस्टेंसेस. इन दैट केस NFS इज सक्सेसफुली क्रिएटेड. अब हम इंस्टेंसेस को क्रिएट करके उस पे माउंट करेंगे. ओके, so just click on that. Here we get the information about your file system. This is your unique ID of your file system 8C47745D. So this one is a unique ID of your file system. Okay, so in the bottom we get the detailed information about your data. Right now only we have only 6 KB of data. Okay, so whenever we upload the data onto the EFS system, the information will be clear. And when we click on the attach, we get some information how we will mount the disk EFS system on client. So here we get the information. If you want to mount the operation on EFS mount, then we need to copy this command on client. If you want to use using NFS cloud network file system client, then we need to copy this data. So here we will use the same data. Okay, ये system हम use करेंगे. For that we require an instance. So step 1 हमने complete किया है यहाँ कि हमने
EFS file system create कर लिया है. Second, we will create 2 to 3 instances. In that case, first of all, we will create 2 instances. Later on, we will add one more instance, and after that, we will mount it. Okay. So go to the EC2 instance. Click on that. Click on the EC2 instance. Here we'll launch 2 instances. On that launch instance, click on the launch instance. We will select the Ubuntu 16.04. Click on free tier. Click on the next. Here we'll launch 2 instances at a time. Click on the next storage. We'll add 30 GB space to the storage. Click on the add tag. There is no need to add right now. Click on the security. In that security click on the select existing and select default. Make a note of that. Here we need to select only default security group. The default VPC security group. So we'll select SG under DC. So make a note of that. Here we need to select only default. We cannot able to select another. See, whenever we create the NFS, see, in that case, here I will log in into the AWS console one more time. Click on that. Click on the EFS system. Your EFS, click on that. See, all the networks are created in by default subnet. Okay, ये by default subnet है. इसी वजह से आपको क्या करना है? Make a note of that. Here we need to select the SGDC. Okay, by default जो भी होगा वही select करना है. So click on the review, and after that choose existing. I acknowledge that and launch the instance. Let's check out whether our instance is created. Click on that. Here I have 3 instances. So right now the older instance I am a bucket naam ka. So here I will create client 1. Client 2. These 2 instances are required. Click on the first instance, go to the networking, sorry, security. Click on this security default. For that, here all traffic, all services for the default, edit inbound rule and add your one rule. Okay. So click on the add rule. Here we need to use SSH and click on here my IP. Okay, do not change by default property. Do not change this. Okay, जो भी by default होगा उसे आपको change नहीं करना है. जैसे भी आप change करोगे तो आपका network access EC2 instance का निकल जाएगा. Make a note of that. यहाँ change नहीं करना है. Just we need to add SSH rule in the default settings. Okay, and after that click on the save. Now just access the EC2 instances. तो हमने इंस्टेंसेस बनाए उसे हम एक्सेस करके देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल एक्सेस द क्लाइंट 1. क्लिक ऑन द डिटेल्स विद एस आईपी एड्रेस. एक की सेटिंग चेंज किए थे ऑटोमेटिकली सबकी सेटिंग्स चेंज हो गई. सो इसके लिए क्लाइंट 2 के लिए सेपरेट सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है. सो चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो. क्लिक ऑन दैट. क्लिक ऑन क्लाइंट 2 सिक्योरिटी. एंड अगर आप बॉटम में देखते हो तो इसमें एसएसएच का रूल ऐड हो चुका है. ओके, सो एक ही चेंज किया तो भी चलेगा. Click on the server and client 1 details, copy public IP, open putty and try to access the EC2 instance. Copy the IP address, enter the data name as Ubuntu. Authentication key as a new. On that, where's my key new, and enter the session name as a client 1. Save. Open it.
accept the condition, full screen, and after that change the settings. On that appearance, increase the font size, click on that, apply. Now we successfully log in into the client one. Similarly, we need to log in into the second one. So click on that, new session, enter the IP address of client 2, click on that, client 2, copy the IP address, enter. Client 1 IP address is 19.39, the client 2 IP address is 94.193. After that, 193, enter the data as the username. Here I will use Ubuntu. Key, add the authentication key. I will use new. Click on that. Enter the session name. Click on the session. Here will add client. Which just open that connection. Accept it. Change the settings. Click on the settings. Appearance, change, and increase the font size. Now we successfully log in into the two instances. अभी हमारे two instance है वो उस पे हमने log in कर लिया. First one is 193, so 13.41 client 2 है. We can say that 41 is a last 41 is a client 2 and client 1 is a 17 and 41. Let's check out. We have two instances. So this one is a 17, that means this one is a client first. So first of all, update your system. Sudo apt update. Sudo apt update y. Update the instance 1. Similarly, we need to update the instance 2 also. Click on that. Sudo y. You can update the second instance also. So if you want to perform any operation, make a note of that. We need to update the system. Why we update? Because some packages are restored. So for that reason, we need to update. So second instance is successfully updated. Yes. Sir, can't we merge that both instance on one putty? What? सर ये जो दोनों जो इंस्टेंस है वो एक ही पुट्टी पे एक्सेस नहीं कर सकते? एक ही पुट्टी पे एक्सेस है ना अभी राइट नाउ. एक ही मेरे पास पुट्टी है, उसके अंदर मैंने दो टर्मिनल सेपरेट ओपन किए. we can सर add एक n number साथ of नहीं कर terminal. सकते दो टर्मिनल्स? नहीं ना, कैसे करेंगे हम दो इंस्टेंस को एक ही जगह कैसे खींच सकते. सो इसीलिए तो हम वही प्रैक्टिस कर रहे हैं ना. फॉर एग्जांपल सी, आई हैव दीज टू इंस्टेंसेस, फर्स्ट वन client 1 and second one is a client 2. if you want to access this storage centrally, central storage करना है तो हम nfs क्रिएट कर सकते हैं. बट उसे एक्सेस करते समय मुझे EC2 को सेपरेट एक्सेस करना पड़ेगा एंड EC2 के सेकंड वी कैन से दैट क्लाइंट 1 को सेपरेट एक्सेस करना पड़ेगा और क्लाइंट 2 को भी सेपरेट एक्सेस करना पड़ेगा. 1 and 2 सेपरेट एक्सेस करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल कंसीडर इफ यू हैव 10 क्लाइंट्स, सो 10 क्लाइंट पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा. कभी भी एक ही लॉगिन के अंदर दो नहीं लॉगिन हो सकते. बट स्टिल इफ यू वांट टू एक्सेस क्लाइंट 2 फ्रॉम क्लाइंट 1 एट ए टाइम एक ही एक्सेस होगा. से अब मुझे यहाँ से मुझे एक्सेस करना है. फॉर दैट अगर आपके ये क्लाइंट 1 पे, दिस वन इज क्लाइंट 1, यहाँ आपकी पेम की अवेलेबल है तो एक्सेस कर सकते हैं. यहाँ से मैं एक्सेस कर सकता हूँ. Okay, but make a note of that. If you want to access any instance, then we will access through terminal 1 and terminal 2. Okay, let's assume that. ठीक है, मैं आपको यही बता देता हूँ. So अपेक्षा आपका प्रॉब्लम थोड़ी देर बाद मैं सॉल्व करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल we will complete this यस task. सर. Okay. Right now, if you want to access these instances, we require a separate terminal right now. Okay, so we successfully copied that data. Now if you want to install the nfs EFS system on this, what we say, instance, so we need to install one more package called as a nfs common. Okay, so let's we will install. So for that, just I will write, for mount purpose, install nfs common.
So how will install? We all know that sudo apt get install nfs common लाइक हाइपन वन। So, ये केस से हमें दोनों क्लाइंट पे, ये कभी भी याद रखना है कि क्लाइंट साइड पे इंस्टॉल होना चाहिए तो ही हम माउंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। So the terminal one and try to install this package sudo get install nfs common, just install it। इसके क्लाइंट साइड के जितने भी पैकेजेस ये इंस्टॉल कर लेगा, so we can easily mount the EFS system on client one। So similarly we'll do same operation on client two also, sudo apt-get install nfs sudo apt-get install mfs common one। सेम स्टेप के हिसाब से ही जा रहे हैं। फर्स्ट हमने एनएफएस सिस्टम क्रिएट किया, वी कैन से दैट दिस वन इज ईएफएस सिस्टम क्रिएट किया। उसके बाद में 2 से 3 इंस्टेंस लॉन्च कर दिए हमने। सो assume that right now we launched 2 instances, after that we successfully install these packages on client। so this one is a command। अब client पे हमने ये command चला दी है, so we successfully installed that। now we will mount this, okay। अब हम माउंट करेंगे। सो फॉर दैट माउंट पर्पस आपको एनएफएस पे जाना पड़ेगा, ईएफएस पे जाना पड़ेगा। तो क्लिक ऑन दैट सर्विसेज, क्लिक ऑन द ईएफएस। ईएफएस पे जाने के बाद में आपको फाइल सिस्टम पे क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन द अटैच, और ये की आपको कॉपी करना है, ओके। यहाँ का जो दिया है सब एज इट इज कॉपी करना है, और यहाँ फोल्डर का नाम यहाँ ईएफएस लिखा है। फोल्डर का नाम क्या है? ईएफएस। फॉर दैट वी नीड टू क्रिएट द फोल्डर आल्सो। सो माउंट के लिए वी नीड टू सेंट्रलाइज्ड फोल्डर पे हमें माउंट करना है, ओके। सो लेट्स डू, विल क्रिएट द फोल्डर ऑन client one also and client two also। so make on that। so here I will create mkdir and our folder mkdir and our folder name is sycac। so let's check out ls, we successfully created on client one। similarly we'll create a folder on client two also, mkdir, and here I will create sycac। let's check out ls sycac। दोनों के फोल्डर अलग अलग लिए तो भी चलेगा, सेम लिए तो भी चलेगा। फॉर कंफ्यूजन हम अलग अलग नहीं ले रहे, सेम ही फोल्डर ले रहे। सो नाउ वी विल माउंट दिस ऑन क्लाइंट वन फर्स्ट एंड फिर क्लाइंट टू करेंगे। सो 17 हमारा क्लाइंट वन है, मेक अ नोट ऑफ दैट। सो ईएफएस ओपन करो, कॉपी दिस एनएफएस क्लाइंट एंड टर्मिनल जाके शिफ्ट इंसर्ट करना है, और यहाँ फोल्डर हमने ईएफएस लिखा था, बाय डिफॉल्ट ईएफएस लिया है इन्होंने। आपको यहाँ फोल्डर चेंज करना पड़ेगा बिकॉज आपने फोल्डर बनाया था sycac के नाम से। सो मेक अ नोट ऑफ दैट, एक एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ एज इट इज रहना चाहिए। सो जस्ट 1 मिनट। इंसर्ट, सो आप यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये एक्स्ट्रा स्पेस है यहाँ, ओके। वो एज इट इज ही रहने देना है आपको। बाकी sudo mount -t टाइप इज nfs4 ऑप्शन, nfs सर्वर हम 4.1 यूज कर रहे हैं। रीड साइज ये है, राइट साइज ये है, हार्ड टाइम ये ऑप्शंस अवेलेबल है इसके साथ, सेटिंग्स के साथ। और दिस वन इज योर डीएसएन नेम AP South1 Amazon AWS.com। so इसमें ओनली चेंजेस क्या करना है, जस्ट EFS की जगह आपको नाम चेंज करना है sycac, क्या चेंज करना है sycac। अगर आपको EFC रखना है तो आप sycac फोल्डर मत क्रिएट करो, इंस्टेड ऑफ दैट आप sycac की जगह EFS क्रिएट करो। so click on that, it took some time to mount the data, so now successfully mounted। so ls करके चेक करो और उस फोल्डर के अंदर जाओ, cd sycac ls करके देखो, we don't have any file here। I will create 5 files, touch my data, press open 1.5,
ls permission is denied. Why? Here we need to add the sudo privileges. Now check ls. We successfully created 5 file, my data 1, my data 2, my data 3, 4 and 5. So ये किसके अंदर हमने क्रिएट किया? डिस्क के अंदर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये माउंट किया है. माउंट करने के बाद में हम यहाँ फोल्डर के अंदर है. अभी ये डिस्क 1 माउंट हो चुका है. लेट्स ट्राई टू माउंट अनदर डिस्क. So यहाँ डिस्क 2 है. क्लाइंट 2 अवेलेबल है. ls करके देखो, sycac फोल्डर है, जस्ट रिमूव इट. If you want to change the folder, this now we don't have a folder. Okay, मैंने sycc को चेंज कर दिया. If you want to change another folder one, so assume that mkdi है, तो यहाँ मुझे efs लेना है तो efs ले सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. बट याद रखना है कि फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो तो दोनों फोल्डर के नेम सेम ही रहने दो. ls करके देखो तो efs फोल्डर. ओके, सो ये जस्ट क्या हो रहा है कि जितने भी हमारे क्लाइंट है, लेट्स चेक द डायग्राम. इसके अंदर ये क्लाइंट 1 है, ये क्लाइंट 2 है. क्लाइंट 1 पे एनएफएस को किस पे माउंट करना है, तो इसके लिए आपको फोल्डर नेम देना है. सो अज्यूम दैट दिस वन इज अ क्लाइंट 1. तो यहाँ हमने यूज किया था, हमने यूज किया एसवाईसीएससी. क्लाइंट 2 पे हम क्या कर रहे हैं? यूज ईएफएस. अज्यूम दैट. ओके, ये नाम देने से कुछ नहीं होता है. आप डायरेक्टरी कौन से शेयर कर रहे हो, आप डिस्क कौन से शेयर कर रहे हो, तो यहाँ सेंट्रलाइज डिस्क है एनएफएस. ओके, वो आप ईएफएस की आप वो शेयर करने वाले हो. ये फोल्डर के नाम कुछ भी लिए तो भी चलेगा, और कंफ्यूजन दूर करना है तो दोनों के ऊपर एक ही नाम ले. ओके, सो लेट्स परफॉर्म दिस ईएफएस ऑपरेशन. ओपन सेकंड टर्मिनल. अब इसके अंदर डायग्राम के अंदर हुआ है क्या कि क्लाइंट 1 लॉन्च हो गया और क्लाइंट 1 ने 5 फाइल्स बना दी है. किस पे? ईएफएस पे. ओके, तो 5 1 मिनट, एनएफएस लिखा है. एफएस एंड ईएफएस इज बोथ सेम बट सर्विस नाम अलग है. So this one is your centralized storage, EFS elastic file system. So इसे NFS भी कहा जाता है, नेटवर्क फाइल सिस्टम. ओके, सो क्लाइंट 1 ने क्या किया है? एसवाईसीएससी फोल्डर में उसे माउंट भी कर दिया है और इसके अंदर फाइल्स क्रिएट किए. कितने फाइल्स किए हैं? 5. सो माई डेटा 1, माई डेटा 2, माई डेटा 3, माई डेटा 4 एंड माई डेटा 5. सो इसका ओनर कौन है? एसवाईसीएससी फोल्डर का ये क्लाइंट 1 होगा. सिमिलरली अब हम क्या करेंगे? क्लाइंट 2 से इसे माउंट करेंगे और ये 5 फाइल्स उसे दिखने चाहिए, तो ही ये सक्सेसफुल सेंट्रलाइज माउंट हो सकता है. ओके, लेट्स चेक आउट. क्लिक ऑन दैट एंड हियर पेस्ट इट. गो टू द ईएफएस सिस्टम, कॉपी दैट एंड पेस्ट इट. सो यहाँ फोल्डर का नाम क्या लिखा है? मैंने ईएफएस लिखा है. ओके, हमारे पास फोल्डर हमने ईएफएस ही बनाया. अगर नाम चेंज करते हो तो यहाँ नाम चेंज कर सकते हो. सो क्लिक ऑन दैट, तो ये डेटा माउंट हो जाएगा ईएफएस के ऊपर. सो वी सक्सेसफुली माउंटेड. सो आप एलएस करके चेक करो, ईएफएस के अंदर माउंट हुआ है. क्लिक ऑन दैट, एलएस बीएल के करके देखो. सो आपको यहाँ ओके, ये सेंट्रलाइज प्रोसेस है, इसकी वजह से ये नहीं दिखाई देगा. ओके, सो आपको यहाँ ईएफएस के अंदर जाना है एंड जस्ट चेक आउट फॉर द एलएस. राइट नाउ सी, मैंने 41 से लॉग इन किया है आईपी एड्रेस. तो इसके अंदर ऑलरेडी 5 फाइल्स आर क्रिएटेड. ये किसने क्रिएट किए थे? इंस्टेंस 1 ने. लेट्स डू वन मोर थिंग. हियर विल क्रिएट 2 फाइल्स हैविंग नेम सपोज sycac. सो sudo touch sycac, press open 1.1.3. Assume that we need to create a 3 files. Let's check out. Right now we have 5 files of client 1, my data 1, my data 2, my data 3, my data 4 and my data 5, and 3 files of client 2. So centralized process होने की वजह से ये दोनों को भी access हो सकती है. So अब हम client 1 पे जाके देखते हैं. So let's check out client 1. Just ls, click on that and do ls. से कनेक्शन चलेगा इसका मोबाइल कनेक्शन होने की वजह से. So we need to restart this connection. Click on that. 1 minute. So just try to log in into the new session. Click on that. Click on the client 1. I think चला गया है. Click on that and restart the session. Restart. See, successfully created. ls करके देखो. cd sycac के अंदर जाओ.
cdsycsc and just press ls. Okay, whenever we do the earlier ls, we have only 5 files: my data 1, my data 2, my data 3, 4 and 5. Let's check out. Right now we have 8 files: my data 1, my data 2, 3, 4, 5 and sycsc 1, 2, 3. We get that information. Okay, so we created this file sycsc, sycsc2 and sycsc3. These 3 files are created by using client 2. So this is an example of centralized system. So इस system के अंदर हमने successfully implement किया है first client, second client and third client, and यहाँ storage similar हो जाएगा. Okay, let's do one more time. अब हम थर्ड इंस्टेंस लॉन्च करके इसी पे माउंट करके देखते हैं. तो इसके हिसाब से आपको सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन दिखाई देगा. Okay, so click on the EC2 instance, launch one more instance. Enter Ubuntu. Just 1 minute. I'm audible. ये डायग्राम के हिसाब से हमने Yes, दो sir. इंस्टेंस पे ये डायग्राम के हिसाब से हमने 2 इंस्टेंस तो लॉन्च कर लिए ईएफए सिस्टम पे. तो हम थर्ड इंस्टेंस पे लॉन्च करेंगे जिससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. सो क्लिक ऑन दैट, like the Ubuntu selected, make a note of that as it is changes होने चाहिए. एक ही इंस्टेंस लॉन्च करो. We can launch 10 instances also. Okay, but for practice purpose हम एक ही करेंगे यहाँ. Click on that. Click on the add storage. Here we'll add the 30 GB. Click on the add tag. Here I will add client 3. Next configuration in the select. In that section, we need to select existing. Click on that and select default. Make a note of that. Whenever we want to access the EFS system, we will select only default. Okay, default with my IP. Okay, here is my IP and this one is my IP for the SSH. Do not make any changes for the default subnet. यहाँ कुछ भी change नहीं करना है. Make a note of that. Okay, click on the review and launch We'll use existing key. Click on that. So try to log in into the instance 3. We have right now 4 instances. Click on that. Copy 4th IP address. Client 3 का IP address copy किया है और उसका IP address के private IP address 63 है. So open the putty. Click on that. Click here. Create new session. Enter IP address. Select the data. Here we'll use Ubuntu and auth key as a secret key for the key. Click on that. Open. Enter session name as a client 3. Client 3. Save it. That and open. Accept the terms and condition. Change the size. Click on the settings, appearance, font size increase up to 18. Open. Now, first of all, we need to perform what? First of all, we need to update the system. So sudo apt, कितने भी system आप add कर सकते हैं. Sudo apt -get. We can also use that get and after that update -y, or either we can use sudo apt update. Okay, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ issue नहीं. So my system is updated successfully. So after update, make a note of that. It is a mandatory to install the NFS common file. Okay, this file is required for mount operation. अगर नहीं install करते हो तो ये mount नहीं होगा. Make a note of that. Okay. So after that, sudo apt -get install as common file. Client 1 ने my data की फाइल बनाई है, क्लाइंट 2 ने sycsc की फाइल बनाई है. ये दोनों के दोनों ही यहाँ एक्सेस होने चाहिए. ओके, माउंट करने के बाद में लेस करके देखो, mkdir
और यहाँ मैं फोल्डर का नाम टेम्प लेता हूँ, ls करके देखो, cd टेम्प के अंदर जाके देखो कुछ है क्या, ls नो, we don't have any data. Okay, so first of all we'll mount it. माउंट करने के लिए आपको EFS पे जाना पड़ेगा, क्लिक ऑन दैट एंड कॉपी दिस, 3 पे आ जाओ, पेस्ट इट, ls और अब पेस्ट करो। अब ये फोल्डर का नाम क्या है, टेम्प, यहाँ फोल्डर का नाम क्या है, EFS है, इतना ही चेंज करना है। यहाँ स्पेस एज इट इज रहना चाहिए, अब यहाँ ऐसे टेम्प नहीं कर सकते, ये माउंट नहीं होगा। ओके, यहाँ स्पेस एज इट इज चाहिए, उसके बाद में माउंट पॉइंट, एंटर, वी सक्सेसफुली माउंटेड। अब ls करके देखो, टेम्प का अंदर जाके देखो, cd टेम्प, इसके अंदर ls करोगे तो माई डेटा की 5 फाइल्स एंड SICS की 3 फाइल्स दिखाई देगी। अब कितने भी इंस्टेंसेस आप ऐड कर सकते हो और उसे यूज कर सकते हो। So this is the overall about the EFS system. Tomorrow we will also conduct one lecture. In that we will launch 3 instances and will host that information. Okay. So हम वेबसाइट पे ये ऑपरेशन ट्राई करके देखेंगे टुमारो के लिए, बट राइट नाउ ये प्रैक्टिस आपको आज परफॉर्म करना है। ओके, सो जैसे भी ये माउंट हो जाए, अनमाउंट हो जाएगा तो ये डेटा मिलेगा नहीं, मेक अ नोट ऑफ दैट। ओके, सो ये पूरी इंफॉर्मेशन ऐसे एक्सेस होगी। अब राइट नाउ आप कितने भी इंस्टेंस लॉन्च करो EC2 से, आप उसे माउंट कर सकते हो। Okay, so this is about today's lecture. So does anyone have query? Let me know, we'll discuss about that. Does anyone have query? I'm audible? सर दैट NFS का स्टेप एक बार बताओ ना। कौन सा? सर NFS का, EFS का वो क्या करना है एक्चुअली? EFS. हाँ, जस्ट शॉर्ट इन Okay. शॉर्ट सर। Yeah. Just we'll create one EFS system. So here we'll create EFS. Click on that EFS. Go to the services. Go to the services. Click on the EFS. Just we need to create it. Click on that EFS. Create file system. Right now we have one file system. We'll create one for a file system. Here I will add PESCV. Okay, so if you want to customize, then click on the customize. If you don't want to customize, just create it directly, the file system will be created. See, right now here PSU file system is created. It took some time to create it, so we need to wait for a few seconds. So right now, see, the file system is successfully created. And how we will launch? On that instance, जो भी हमारे पास सिस्टम क्रिएट हुए, अटैच पे जाना है और यहाँ से कॉपी करना है। आपको याद करने की भी जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ से जाके आपको कॉपी पेस्ट करना है। इज इट ओके अपेक्षा? Yes sir, fine. That network issue was there na, that's why I was not able to see this step. बाकी सब Okay, easy. no issue. So I already recorded this session, so whenever I get that, I will upload it on YouTube, so you can get that total video. Yes sir. Any other questions? See, अपेक्षा आपके ही क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। अनदर क्वेश्चन पूछा था कि कैन आई एबल टू एक्सेस द अनदर इंस्टेंस, assume that this one is my client 1, so ये मेरा client 1 है, इसका प्रॉब्लम है। तो ये कैसे मोबाइल से एक्सेस करते हैं ना, तो इससे कनेक्शन चले जाते हैं इसके। जस्ट लॉग इन इनटू दैट। तो इससे रिस्टार्ट करेंगे, रिस्टार्ट द सेशन। See, this one is a client 1. So my question is, can I access client 2 from client 1? What is the answer? Apeksha, can I able to access the client 2 from client 1? So this is the IP address of client 1, 172.31.5.17. So let's check out. Click on that EC2 instance. On the EC2, click on the instance.
client 1, click on the client and see 172.31.5.70. 3127 172.31.5.70. This is a client 1, and the client 2 was 41 13.41. Let's check out. Open that, click on the client 2 and see 13.41. So my question is, can I able to access client 2 from client 1? What is our answer? You need to specify whether it is true or whether it is false. Doesn't matter. Just we need to specify the answer. Can I able to access client 2 from client 1? Yes or no? We need to answer specify either yes, either no. Pratik? No, sir, we No, can't sir. do it because the IP is different, na. My question is, can I able to access? We all know that if we have a normal Windows system or if we have a normal Linux system, we can access the AWS cloud. We can access the EC2 instance. The answer is yes, we can access, but we need to specify the IP address. The answer is yes, we can access. Just 1 minute. Yes, we can access, but we need to specify the IP address. So how will do the access? Just we need to enter the SSH, type an I, key name, and after that username, after that @ IP address. So by using this way, we can able to access the client 2 from client 1. Let's do the practical. For that we required a key, but right now we don't have a key, so we need to copy that key. यहाँ पे copy करना पड़ेगा. Okay, so first of all just 1 minute, मुझे copy करने के लिए एक दो task perform करने पड़ेंगे. Assume that this one is Google. याद नहीं आ रहा है. Just 1 minute. से कभी भी एक्सेस करते हैं तो हम डॉट पीपीके यूज करते हैं, और एसएस से करना है, लिनक्स से करना है तो हम पेम की यूज करते हैं. सो जस्ट वन हियर विल क्रिएट द लिंक, ऐड फाइल्स, AWS key, and here is my new.pem. So here is my pem key. Click on that, load it. So it will create a link. Load it for me. Click on that, load. This link is created. Copy it, go to the instance 1. Here I will use wget command, and after that the name, and after that we will enter the new.pem. Now we successfully downloaded that. Let's check out the ls.pl extension, whether that key have executable operation. Right now the key does not have execute operation, so we need to add the +x. We already did this. So if you want to access the files, AWS cloud or EC2 instance from the SSH, we need to add the SSH key. We need to add the execute permission. So here is your new pem key, and here only read and write permission is there. Okay, so just add sudo chmod 700. root को हम पूरी permission दे रहे हैं, other को 00 करें, and the name of file is new.pem. ls करके देख करो. अब ये कलर भी चेंज हुआ है और इसे एग्जीक्यूट की भी परमिशन मिल गई. अब हम इसे एक्सेस करेंगे. ओके, राइट नाउ चेक आउट द आईपी एड्रेस 17. दिस वन इज अ client 1. So SSH I, the key name is new.pem, username is ubuntu, ubuntu, @ we need to copy the IP address. Okay,
So what is the public IP address? Let's check out public IP address of client 2. So this one is public IP address. Copy it and paste it. Okay. Enter. अभी एक्सेस होगा क्या? आंसर क्या आएगा? नो और यस. आईपी भी सेम है, ऐसा कुछ नहीं कि आईपी अलग है. Just 1 minute. ऐसा एक्सेस होता है. So here we'll copy the public DNS. ssh-i identify new.pem ubuntu as the DNS. C -yes. Permission denied. जैसे भी मैंने ये अपलोड किया है ना, इससे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है. सो ऐसा दूसरे ऑपरेशंस है, उसके हिसाब से हमें ये की वहां तक ट्रांसफर करनी पड़ेगी. सी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज जब भी हम इंस्टेंस लॉन्च करते हैं तो एट दैट टाइम इंस्टेंस के टाइम में हम प्राइवेट की जो है ये डाउनलोड करके रखते हैं. तो ये की का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, बट डायरेक्टली हम इंस्टेंस 1 से इंस्टेंस 2 को एक्सेस कर सकते हैं. तो एक बार प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखो, अगर नहीं हो रहा है तो कल मैं एक बार रिवाइज करके देता हूँ. ओके अब ये की में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये हो रहा है. चेक आउट वन मोर टाइम ls एंड इसे मैं मूव करता हूँ mv. Yes, I will try to access one more time. Warning, no such a file or directory. Just 1 minute. परफॉर्म करना है तो हम कर सकते हैं. Cat new. So rm new delete less sudo new.pem के पास जाएंगे. aws इसके अंदर न्यू क्लिक ऑन दैट. ये कॉपी करेंगे. कंट्रोल एंटर कंट्रोल सेवन हेल्प करके देखेंगे. ch sudo chmod ch on new.pem. Now just एक बार फिर से रन करके देखते. sudo ssh-i new.pem ubuntu. सी आईपी एड्रेस चेक करो इसका. अर्लियर अब एग्जिट करता हूं मैं यहाँ से. सो लॉग आउट. आईपी एड्रेस क्या है? 170.31.5.17. ओके अब मैं इसे लॉग इन करता हूँ. ssh-i my key name is new.pem. आफ्टर दैट यूजर नेम इज ubuntu. आईपी एड्रेस @ आप इसके लिए दो ऑप्शन यूज कर सकते हैं. आइदर वी कैन यूज पब्लिक आईपी और आइदर वी कैन यूज DSN. दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो. हियर आई विल यूज पब्लिक आईपी and insert. मे बी आईपी के लिए थोड़ा सा इशू आ रहा है, बट आईपी से भी एक्सेस होता है, कुछ भी इशू नहीं है. सो जस्ट ट्राई बाय यूजिंग DNS. एंटर. स्टिल प्रॉब्लम. लेसेस वी सक्सेसफुली लॉग इन. थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है. अब लॉग इन कहाँ है देखो हम 13.41. तो यस वी कैन एक्सेस. we can access client from client 1. कुछ भी इशू नहीं है. ओके अब यहाँ से हम कुछ फाइल क्रिएट करते हैं तो क्लाइंट 1 पे भी दिखाई देगी, क्लाइंट 2 पे भी दिखाई देगी.
अब उसके बाद मैं ये बता रहा हूँ कि मैं आपको हाउ विल डिलीट द ईएफएस। ईएफएस डिलीट भी करने आना चाहिए आपको। क्लिक ऑन दैट। क्लिक ऑन सर्विसेज, क्लिक ऑन द ईएफएस। जैसे भी आपका काम खत्म होता है तो आप ईएफएस और EC2 दोनों डिलीट कर सकते हो। सो क्लिक ऑन दैट, यहाँ आपको क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन द डिलीट। जैसे भी आप डिलीट करते हो तो यहाँ आपको आईडी नेम डालना पड़ता है, तो यहाँ से ही कॉपी करना है आपको। कॉपी इट, पेस्ट एंड कंफर्म। Successfully the EFS system will be created. Sorry, deleted. So refresh it. After some time it will be deleted. ये थोड़ा टाइम लेगा डिलीट करने के लिए। क्लिक ऑन दैट, क्लिक ऑन डिलीट, जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट, कंफर्म। Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. So I thought there is no internet connection because my WhatsApp is not running. Okay, so like that we can able to perform the operation. After some time the file system will be deleted. See, the file system is deleted. Okay, so थोड़ी देर बाद ये फाइल सिस्टम आपकी जो भी है ये डिलीट हो जाएगी। श्योर करना है कि आप डिलीट कर रहे हो कि नहीं, डिलीट हो रही कि नहीं। सी द फाइल सिस्टम इज डिलीटिंग एंड वी सक्सेसफुली डिलीटेड द फाइल सिस्टम। जैसे भी आपका टास्क खत्म हो जाएगा तो जितने भी EC2 इंस्टेंस है उसे भी डिलीट करना है। काम खत्म हो गया है तो डिलीट करना है, बिकॉज इसे कंटिन्यू नहीं रखना है। क्लिक ऑन द एक्शन, सॉरी इंस्टेंस डेट एंड टर्मिनेट द इंस्टेंस। और एक बार टर्मिनेट होने के बाद में वो एक्सेस नहीं होगी। ओके, सो जस्ट कोड ऑप्शन मैं क्लोज करता हूँ, स्टॉप। Hope so you will get the idea how we'll create the EFS system.